नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिरुद्ध। आप सभी का द सिविल गुरुजी और स्वैग से स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। कैसे आप लोग? होप ऑल ऑफ यू आर सेफ। सो इन दिस पर्टिकुलर video, stay tuned till the end of this very important video where I am going to talk about GATE 2023 engineering mathematics model questions with detailed solution to all the questions. The solutions are not given by IIT actually, but questions were given. So वही questions का हम solution यहाँ पे करने वाले to so that you can get an idea about what kind of questions actually can be asked over here. तो जरूर stay tuned till the end of this particular session, and if you are new to this channel, hit the subscribe button right now for daily such informative and useful contents. चलिए शुरू करते हैं. So let's begin with the first question actually, which is given over here. I think I'm audible and visible to all of you people perfectly. Okay, so the relative error in the calculation of this is a 1 mark question. All the marks were also specified clearly. Okay, the relative error in the calculation of a volume of a sphere is nearly dash times the relative error in the measurement of the radius. So let's see, you know what is the volume of the sphere in terms of radius? If I say it's 4/3 pi into r cube. Now relative error का मतलब क्या होता है? What is mean by relative error? Relative error in calculation of volume का मतलब होता है डेल्टा v by v. इसको हम बोलते हैं relative error in the calculation of volume. And this is the relative error in the calculation of radius, delta r by r. तो इस तरीके से जो क्वेश्चन है हम कैसे करते हैं? फर्स्ट टू टेक ln of both sides, log base c, है ना? ln ले लिया मैंने. ln v is equal to ln 4/3 pi प्लस 3 ln r. यहाँ पे दो प्रॉपर्टी का मैंने इस्तेमाल किया. What are the two properties that I've used over here? I think all of you know. Still, in case you don't know, मैं बता देता हूँ. That is, first of all, is ln a into b. That is ln of a plus ln of b. इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया फर्स्ट. And second is ln, suppose a to the power x or log a to the power x. That is x ln a. x इधर आ जाता है. So these two properties are basically used over here. I think you people know. Fine. Now what after that? Just I am going to take differential of both sides. मैं differentiate कर रहा हूँ basically both side को. तो ln v, if I take differential of this, then what I am going to get? dv by v. 1 by v होता ना ln. So next, it's a constant, right? 4/3 pi is a constant. So ln of 4/3 pi is also a constant. तो उसका डेरिवेटिव करें, क्या आएगा? 0 प्लस 3 delta r by r. Any problem? Let me know in the live chat section. So the relative error in the calculation of the volume of a sphere is nearly, clearly you can see that dv by v, that is equal to 3 into dr by r. So that is 3 times. Clear? 1 marks. Next, a river is 24 meter wide. Okay, fine. The depth z in meters at a distance x meter from one bank is given by the following table. The area of river cross section using Simpson's 1/3 rule is dash meter square. This is also a 1 mark question as given in the model questions. तो चलिए देखते हैं. That is your the area of river cross section using Simpson's 1/3 rule. So I think you know what is Simpson's 1/3 rule. तो वहां पे हम क्या करते हैं Simpson's 1/3 rule में? We take a basically, that is the difference d by 3. Some people write it h by 3, which is basically the interval. जैसे कि यहाँ पे इंटरवल आप देख पा रहे हो, इट इज 3 3 3 करके बढ़ रहा है, राइट? इनटू फर्स्ट ऑर्डिनेट. फर्स्ट ऑर्डिनेट क्या है? 0. दिस इज द फर्स्ट ऑर्डिनेट. व्हाट इज द लास्ट ऑर्डिनेट? 0.9. तो d का जो वैल्यू दैट इज 3. 0 प्लस 0.9 प्लस 4 इंटू the even ordinates. Even ordinates matlab there is a second, the fourth, the sixth, the eighth, all this. So it is like 1.2 plus 2.7 plus 4.5 plus 2.4 plus 2 into the odd ordinates. What do you mean by odd ordinates? Odd ordinates are the ordinates except the first and the last one, right? First, last को हम नहीं मान रहे. Except them, whatever are the other ordinates, like what you are getting over here is
the third one, for example, the third one, I mean the remaining, right? Third one, fifth one, and seventh one, whatever. So it is 2.1, 2.7, sorry, 2.1, 3.6, sorry, 2.1, 3.6, and 4.2. 3.6, 4.2. This is the answer basically. So whenever you will do it, first of all, please don't use this calculator, right? Use gate calculator. ये कैलकुलेटर से मैं यूज करूंगा और कोई नहीं, ठीक है, क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी करना है. But please, you become so pro. I want actually all of you people, gate calculator के ऊपर मेरे वीडियो भी है, आप चाहो तो देख सकते हो in this particular channel itself. 2-3 videos I have made actually on this gate calculator thing. तो आप जो है जरूर जरूर देख लेना उस चीजों को. So I'm getting 63.9 मीटर स्क्वायर एंड आपको 1 डेसिमल प्लेस तक ही लिखने के लिए बोला है. इट्स एन एनएटी टाइप क्वेश्चन. बी वेरी केयरफुल. यहाँ पे अगर सपोज इन द सेम क्वेश्चन दे आर आस्किंग यू टू राउंड ऑफ अप टू 2 डेसिमल प्लेस, देन यू वुड हैव टू राइट 63.90. आपको 90 लिखना पड़ता. इफ यू वुड हैव राइट 63.9, जो जीरो आप नहीं लिखे हो वो आईआईटी वाले आपको दे देते. ठीक है, सो बी केयरफुल. Particular solution to the differential equation dy by dx. So it's a clear, you can see it's a Leibniz form actually, मतलब linear equation जो है उसी format में. So I think just compare it. dy by dx plus p into y is equal to q. This is the format. Look, where p and q are functions of x or constants, right? इस format में अगर होता है चीज तो क्लियरली यू कैन सी फ्रॉम हियर, इफ यू कंपेयर दैट p is equal to 2 and q is equal to e to the power minus x. What is the solution here? The solution, the general solution actually of this particular thing is very simple. That is y into integration factor, that is equal to integration q into integration factor dx plus c, where integration factor is equal to e to the power p dx. इसको हम बोलते हैं इंटीग्रेशन फैक्टर or IF actually, right? Integrating factor, sorry. So basically, what is this value? P तो 2 है. 2 into dx, that means what it is? 2x. This is your integrating factor. Very good. Now let's talk about what is the complete solution. That is y into e to the power 2x into integration e to the power minus x, e to the power 2x dx plus c. कोई confusion है तो please do let me know. So in the comments. अच्छा, तो इधर क्या हो रहा है? e to the power minus x 2x, मतलब ये हो गया e to the power x plus c. So it's one of the boundary conditions are definitely given actually, so that you can calculate the value of c. साफ साफ दिया हुआ है y is equal to 1 when x equal to 0. इस्तेमाल करो इसको. That is your 1 into e to the power 0, e to the power 0 plus c. तो c is equal to 1 minus 1, that is 0. तो आपका इक्वेशन क्या आ गया? y e to the power 2x equal to e to the power x, but it is not given in this form. तो y is equal to just divide both side by e to the power 2x. इसको इधर लेके आओ. So y is equal to e to the power minus x. That is your option A is correct. I hope you have got the problem. समझ में आया होगा. In some of the MSQ questions also, what they can give the solution. आप बोलोगे सर solution आ गया y is equal to e to the power minus x, चलो टिक मार दिया. But suppose the same thing, ये देखो y is equal to e to the power minus x, ये ना लिख के I could have written it like this, y into e to the power 2x equal to e to the power x. या फिर I can also write it like, just I am saying you, मैं इसे लिख सकता हूं ना. तो सपोज मान लो ऑप्शन ए में ये दिया हुआ है, ऑप्शन सी इज गिवन दिस और ऑप्शन डी इज गिवन दिस. ऑल आर करेक्ट एक्चुअली. गेटिंग माय पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. तो ऐसे भी हो सकता है, इन मेनी ऑफ द केसेस दिस हैपेंस एक्चुअली. सेम चीज सेम रिजल्ट है, बट इन 3 डिफरेंट क्वेश्चंस इट्स गिवन इन 3 डिफरेंट वेज. गॉट माय पॉइंट? 3 डिफरेंट ऑप्शंस. सो ऑल आर करेक्ट. एमएसक्यू क्वेश्चन में ये पैटर्न फॉलो हो सकता है, सो प्लीज बी केयरफुल. And I will come up with a dedicated video where I will give you an official updates on what are the number of MSQs which is possible in GATE 2023 paper wise. आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना for daily such updates, important and useful. The value of I is equal to पूछा गया आपको, is how much? Let's see that what is the correct answer. तो आप समझ रहे हो यहाँ पे, this is actually I have done it in this way. Let's see. इस तरह के क्वेश्चन मैं एक टाइप से करता हूँ. आप चाहो तो दूसरे टाइप से भी कर सकते हो. इट्स अप टू यू कंप्लीटली.
एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4, इज इट एनी होल स्क्वायर वगैरह कुछ आ रहा है क्या? माइनस 2x प्लस नहीं, तो होल स्क्वायर जो आ रहा है वो कितना आ रहा है? एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 होता है होल स्क्वायर प्लस 3। ओके, तो इट्स x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस रूट 3 स्क्वायर, चलेगा? राइट, आई हैव एक्सप्रेस्ड इट एज अ सम ऑफ टू होल स्क्वायर्स, राइट? Again, this is just a way I took this take this particular problem. आप चाहो तो दूसरे किसी तरीके से कर सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। प्लीज आप मुझे कमेंट करके बताना whether your answer is my answer matching or not. x minus 1 is equal to, मैं रूट 3 है ना, रूट 3 tan थीटा मान लिया, चलेगा? therefore dx equal to रूट 3 sec square थीटा d थीटा, yes or no? चलेगा ये भी? ओके फाइन। नाउ यू टेल मी दिस पर्टिकुलर थिंग, ये जो पूरा का पूरा चीज नीचे कार्यक्रम दिया हुआ है, राइट? व्हाट इज दिस थिंग? x माइनस 1 होल स्क्वायर, ये जो पूरा कार्यक्रम दिया हुआ है ना, दैट इज बेसिकली रूट 3 tan थीटा स्क्वायर प्लस रूट 3 स्क्वायर। दैट मीन्स इफ यू टेक 3 एज कॉमन, अगर आप 3 को कॉमन ले लेते हो, राइट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, right, if you take 3 as common, root 3 square, that means 3 as common, then we are left with tan square theta plus 1, that means sec square theta. कोई कंफ्यूजन किसी को है या ना? यू नो आई गेस दैट 1 प्लस tan square theta is equal to sec square theta, right? Now what you are going to do, यहाँ पे बस वैल्यू पुट कर दो। Now your limits also going to change because you have considered x minus 1 to be root over 3 tan theta, तो आपका जो लिमिट है वो चेंज होगा ना। दैट मीन्स व्हेन x इक्वल टू 1, आप बोलो क्या होगा? व्हेन x इक्वल टू 1 पुट x इक्वल टू 1, tan थीटा कितना होगा? 0। तो tan थीटा 0 माने थीटा कितना? 0, हाँ या ना? सो थीटा इज 0 व्हेन x इक्वल टू 1। जस्ट पुट हियर x इक्वल टू 1, यहाँ पे x इक्वल टू 1 पुट करो, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू रूट 3 tan थीटा, तो tan थीटा कितना? 0। अच्छा, सिमिलरली इफ आई पुट x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 पुट करो, 2 माइनस 1 इज इक्वल टू रूट 3 tan थीटा, दैट मीन्स 1 इज इक्वल टू रूट 3 tan थीटा। तो tan थीटा का वैल्यू कितना होगा? 1 बाई रूट 3। 1 बाई रूट 3 tan थीटा का वैल्यू माने थीटा इज हाउ मच? 30 डिग्री, राइट? सो हो गया चीजें। नाउ प्लीज राइट इट डाउन, इट इज रूट 3 सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई, नीचे जो भी है दैट इज योर 3 सेक स्क्वायर थीटा टू दी पावर 3 बाई 2, ऐसे कुछ है कार्यक्रम, राइट? सो दिस इज योर रूट 3 सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई 3 टू दी पावर 3 बाई 2 मतलब है 3 रूट 3, 3 टू दी पावर 3 बाई 2 मतलब 3 रूट 3, कोई डाउट नहीं। सेक स्क्वायर थीटा टू दी पावर 3 बाई 2 मतलब सेक क्यूब थीटा, तो इट इज लाइक 1 बाई 3 सेक स्क्वायर थीटा बाई सेक क्यूब थीटा मतलब 1 बाई सेक थीटा, 1 बाई सेक थीटा मतलब कॉस थीटा। देखो कितना आसान हो गया चीजें। तो 1 बाई 3 0 टू 30 cos थीटा डी थीटा। नाउ व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा? cos थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है? sin थीटा। तो 1 बाई 3 sin थीटा ऊपर 30 नीचे 0, दैट मीन्स 1 बाई 3 sin 30 हाफ माइनस sin 0. The answer is 1 by 6. So the correct answer is option B. Obviously it's a 2-mark question. The previous one was also a 2-mark question, guys. हाँ, ये 1 mark था. This was also 2-mark question. Total 10 marks worth of question is given in the model paper. चलिए देखते हैं. Assuming the unitless normalized values of turbidity, okay, fine. The joint probability density function of these variables is given by this particular thing, probability value of this. तो आप जानते हो that for a PDF मतलब जो वर्ड को कन्वर्ट करते हो वो वाला PDF नहीं, it is probability density function, right, which gives you actually the value of the probability, right, for a particular जो फंक्शन है उसके लिए आप probability की जो वैल्यूज वगैरह है वो आप उससे फाइंड आउट करते हो, राइट? अंडरस्टैंडेबल टू यू। तो एक सेकंड में देख लेता हूँ एक चीजें कि सारे चीजें आपको दिख रहा है ना, कोई मेरे फोटो के वजह से ढक तो नहीं जा रहा है कुछ चीजें? ओके फाइन, एक चीज है बस, यू नो, लेट मी जस्ट पुट इट ऑफ। आई गेस यहाँ पे आपने देखे होंगे 4 into the even ordinates था, राइट? यस, आई विल जस्ट सेट अप दैट क्रोमा, नो प्रॉब्लम ओवर देयर। यहाँ पे शायद कुछ ढका नहीं होगा, राइट? फाइन। नाउ लेट्स कम बैक ओवर हियर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। द प्रोबेबिलिटी वैल्यू p लेस इक्वल टू x लेस इक्वल टू हाफ, y लेस इक्वल टू हाफ। तो आप समझ रहे हो यहाँ पे साफ साफ दिया हुआ है दैट f(x, y) is the probability density function.
तो आपको अगर पूछा गया है प्रोबेबिलिटी, यहाँ पे दो वेरिएबल है, नॉर्मली हमारे जो क्वेश्चन रहते हैं, दे आर ओनली वन वेरिएबल इज देयर, दैट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन इज से e to the power x and you are asked to find out what is the probability, tell me x less equal to half. तो आप क्या करते हो, इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू हाफ इफ इट्स वैलिड फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी. यहाँ पे वैलिड है ये 0 से 1 तक, इसके नीचे है ही नहीं कुछ, राइट मतलब 0 से 1 के बीच में इसका कुछ वैल्यू है, अदरवाइज इट्स 0 एवरीवेयर. सो एक्चुअली आपसे पूछा है 0 to half, 0 to half, तो इसमें दो वेरिएबल है, टू वेरिएबल्स आर देयर, तो व्हाट यू आर गोइंग टू डू, सिंपली डबल इंटीग्रेशन कर दोगे. अरे कोई दिक्कत है हाँ या ना बोलो, यू विल डू डबल इंटीग्रेशन, एक बार x के लिए एक बार y के लिए, खत्म. dx dy, एनी प्रॉब्लम, दैट इज द एंटायर स्टोरी, प्रोबेबिलिटी वैल्यू. हाँ या ना बोलो, कोई कंफ्यूजन, बिकॉज दैट इज द फंक्शन, राइट, फंक्शन तो वही दिया हुआ, इट इज बेसिकली व्हाट, 0 to half, 0 to half f of xy dx dy, यही चीज है. f of xy का तो वैल्यू है सिर्फ 0 to half के बीच में, राइट, बिकॉज मतलब 0 to like 1 के बीच में, अदरवाइज इट्स डज नॉट हैव एनी वैल्यू, राइट, कोई वैल्यू ही तो नहीं है 0 to उसके बीच में. तो व्हाट यू कैन डू, जस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल सपोज यू आर इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू dx, तो dy को इधर रखो. तो एक काम करते हैं, दैट इज लाइक 2/3 को तो सबसे पहले बाहर कर देते, 0 to half इट इज लाइक x plus 2y, राइट, x plus 2y into dx. तो क्या हो जाएगा गुरु, फटाफट बोलो. when you are integrating with respect to x, I have told you consider y as constant, y को आपको constant मानना होगा. so what is it basically, तो it is like x square by 2 x dx plus 2y dx. 2y dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, इट इज 2y into x, because y is to be treated as constant, क्योंकि y की बारी आएगी अभी, y's turn is going to come right now. okay, so it's 2/3, its value when you are going to check x square by 2. अब आप y के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट कर रहे हो, बट फर्स्ट ऑफ ऑल पुट द वैल्यूज हाफ वगैरह करके, राइट. सो ऑन दैट ओकेजन यू आर गोइंग टू गेट, लेट मी जस्ट, कितना वैल्यू आएगा यार इसका, हाफ अगर पुट करते हैं हम तो 1/8, राइट, 1/8 plus 2 into y into 1/2, that means it's simply y if I am not wrong, right, into dy. अब इसको आप इंटीग्रेशन कर रहे हो y, so it's 1/8 y plus y square by 2. अब इसको फिर से इंटीग्रेट करो, लेट मी जस्ट एड अ स्लाइड गाइस, okay, so that I can explain that things to better to you. Just a second, let me add a slide guys. Yes, I have added it. So actually it's 2/3 whenever I'm writing 1/8 into half minus 0 plus 1/2 into 1/2 square minus 0. Am I correct? कोई प्रॉब्लम किसी को, हाँ या ना? चलो, now what is the answer? It is 1/16 plus 1/8. So it is your 3/16. So the answer is 1/8. So the correct answer is option C. आगे बढ़ते, there's a last question, that is an MSQ question. कैसे पता चला, देखो साफ साफ लिखा हुआ है, is or are the eigenvectors of the matrix 4 2 6 8 is or are how much, right? So you know that for the calculation of eigenvector what you do, first you definitely do, क्या करते हो आप सबसे पहले, you do calculate the eigenvalues from the Cayley-Hamilton theorem, that is your Cayley-Hamilton theorem, जो कि आपकी वो है, Cauchy-Hamilton theorem बोलते इसको, the eigenvalue, the characteristic equation rather, right? So that is your a minus lambda I is equal to 0, determinant of, right? तो आप इसको क्या करते हो, डिटर्मिनेंट करते हो, 4 minus lambda 6 to 8 minus lambda, that is equal to 0, right? Now if you are going to do, आप इसको थोड़ा सॉल्व करो, 4 minus lambda 8 minus lambda minus 12 is equal to 0. So when you are going to do it, it's going to come 32 minus 4 lambda minus 8 lambda plus lambda square. Am I correct? So it's 12 lambda plus lambda square minus 12.
So it's going to come like 12 lambda square minus 12 lambda plus 20 is equal to 0. So lambda minus 2 lambda minus 10. So lambda is going to have two values if I'm not wrong. One value is 2, one value is 10. Please let me know if you are also getting the same value, yes or no. तो अगर आपको ये दोनों वैल्यू मिल रहा है, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? हाउ डू यू कैलकुलेट द आइजन वेक्टर्स? आप कैसे कैलकुलेट करते हो? दैट इज ए एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स. ऐसे ही आप एक्चुअली कैलकुलेट करते हो, राइट? इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ए एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स. नाउ व्हाट यू डू एक्चुअली, ए इज द मैट्रिक्स एक्चुअली, जो मैट्रिक्स आपको ऑलरेडी दिया हुआ है यहां पे, दैट इज योर 4 6 2 8 4 6 2 8 इंटू एक्स, राइट? सपोज मैं पहले लैम्डा को 2 मान रहा हूं, बिकॉज आई विल बी गेटिंग 2 आइजन वेक्टर्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू 2 आइजन वैल्यूज. 2 आइजन वैल्यू तो मुझे 2 आइजन वेक्टर मिलेगा. अच्छा, 4 6 2 8 इंटू एक्स. एक्स इज द कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, मतलब जो आइजन वेक्टर है उसका आइजन वेक्टर जो है, दैट इज द एक्स. तो यू कैन कंसीडर, चलो इसको मान लो x1 x2, सपोज देयर आर 2 एलिमेंट्स, राइट? एंड लैम्डा को अपने 2 माना है, तो 2 इंटू x1 x2. So if you just multiply it, can you please do it? What is the value coming? 4x1 plus 6x2. 4x1 plus 6x2. 2x1 plus 8x2. That is equal to 2x1. That is 2x2. Just compare and tell me what's the answer or result, what you are getting. That is your 2x1 is equal to minus 3x2. इससे भी क्या आपको वही सेम रिजल्ट मिल रहा है? minus 6x2, sorry. So you are getting kind of x1 is equal to minus 3x2. From the next also you will get the same thing. मतलब किसी एक को compare करो. So which particular eigen vector is giving you this particular thing that x1 is equal to 3 minus 3x2? देखो option B. x1 is equal to minus 3x2. So one of the eigen vectors you have got, that is option B. Now let's search for the other one. Now we will take lambda is equal to 10. वो मान के करेंगे हम. चलो, lambda is equal to 10 मान लिया हमने. So whenever you will consider lambda is equal to 10, in the same fashion you will do. That is a 4 6 2 8 ax equal to lambda x, right? x1 x2 that is equal to 10. Either x1 x2. Now whenever you are going to do, it's like 4x1 plus 6x2 2x1 plus 8x2. इधर आ जाएगा 10x1 10x2. So whenever you are going to compare, you are going to get, just एक compare करो, दूसरा भी same ही आएगा. So it is going to come like, 6x2 is equal to 6x1. Therefore x1 is equal to x2. Second से भी वही आ रहा है, 2x1 हाँ. So x1 is equal to x2. Which of the eigen vectors are going to give this particular thing? x1 is equal to x2. This option C. I'm telling you the trick. Actually trick ये है, suppose in this particular thing आपको सिर्फ eigen vector निकालने के लिए बोला, right? There are plenty of values over there. So consider always x1 to be 1. x1 को 1 मानो, or rather x1 नहीं, मतलब whatever this element is, rather x2 को 1 मानो, the smaller one actually, that you consider as 1, the smaller one, whatever जो भी आपका smaller value होगा, right? Whatever is the smaller value, smaller x1 x2 में से, consider that as 1 value magnitude wise, right? Forget about the signs and consider the other value as corresponding to that. Clear? समझ में आया? So this is how it should work. So this is also a 2 mark question. It's an MSQ. B and C are correct. तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो. बट फॉर मेनी मोर क्वेश्चंस लाइक दैट, डेफिनेटली दिस आर जस्ट द मॉडल क्वेश्चंस प्रोवाइडेड बाय आईडी. बट इसके सिवा भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट क्वेश्चन है विच यू कैन डेफिनेटली अवेल in our math plus apti course, which you can get at a very affordable rate if you are filling the Google form right now, because today is the last date. मैंने टेलीग्राम चैनल पे बहुत बार पोस्ट किया था that you can get it at 1599 rupees. Yes, you are hearing me right. Concept to expert question, live class, recorded class plus PDF, everything you are going to get proper. पोल बेस्ड लाइव इंटरेक्टिव सेशन जैसे होता है, टाइमर वाइमर सब कुछ एकदम प्रॉपर आपको मिलेगा. इफ यू आर ज्वाइनिंग बाय टुनाइट, it's 1599. Just register in the Google form. And if you are joining tomorrow, it's 1699. And after that, tomorrow onwards, अगर उसके बाद आप कभी भी ज्वाइन करो, 1799. Why I'm telling you this? आप बोलो सर एक दिन में, आप एक दिन में नहीं. I have updated this price actually 3 days ago. It's a
3 days long offer which was going on. I have posted every details in my Telegram channel. So join there or follow me on Instagram definitely. My Instagram handle name is Aniruddha9922. Its link is also in the description and Telegram channel का नाम same as the YouTube channel name. So subscribe करो and वहां पे जाओ देखो. There are many more important videos which are going to come. Stay tuned. And by the way guys, if you don't want to spend suppose 1600 rupees 1700 1800 रुपए जो भी है, मतलब ये भी मान लो आपको ज्यादा लग रहा है, मान लो जो मतलब कोई सेंस नहीं है इस बात की, बट स्टिल सपोज, और सपोज यू वांट टू नो समथिंग मोर एक्स्ट्रा, अगर आप चाहते हो, सपोज यू वांट टू get all the PYQs as well some mind maps and all these things in the form of a book, so that one also we have. हमने जो बुक एडिट वगैरह किए हैं, रिव्यूज वगैरह किए, वो बुक अभी अवेलेबल भी है ऑन Amazon. सो डेफिनेटली यू कैन परचेज दैट बुक फॉर मैथ एज वेल एज एप्टी, दोनों ही चीज का बुक. इट्स गिवन इन द डिस्क्रिप्शन. एप्टी का भी जो मॉडल क्वेश्चंस है, दैट मॉडल क्वेश्चन वीडियो इज एंटायरली गिवन इन माय चैनल. एंड जस्ट व्हेनेवर यू विल विजिट माय चैनल वीडियोस, आपको जो सबसे पॉपुलर वाला सेक्शन दिखेगा, पॉपुलर वीडियोस, उसमें सबसे पहली वो वीडियो है. So you can get it from there also, or just you can type GATE 2023 model aptitude questions on YouTube, Aniruddha sir, you will get it. Okay, thank you for being here for so long. I hope you have enjoyed the session. For more such sessions, definitely don't forget to hit the like button and subscribe button. जल्दी से जल्दी कर लेना सब्सक्राइब. आपको अच्छा लगा है तो जरूर जरूर मुझे भी अच्छा लगेगा. कैसा लगा ये लेक्चर, आपको सारे के सारे प्रॉब्लम समझ में आया कि नहीं आया? डू लेट मी नो इन द कमेंट्स. If you do have any doubt or confusion, please feel free to ask anywhere through any social media. आप कहीं पे भी मेरे साथ जो है interact भी कर सकते हो through Instagram. And after joining the courses, definitely ensure 28 marks with me, 28 out of 28, that is for math and apti, if you really are looking to get a super duper rank in GATE 2023. मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी in the course. अगर आप लोग अभी तक ज्वाइन नहीं किए, जरूर जरूर ज्वाइन कर लेना. ऑलरेडी 183 people has joined. I am very soon expecting that this number is going to cross 500. जल्दी जल्दी आप ज्वाइन कर लेना. थैंक यू गाइस, टेक केयर.